First up, Delhi's JNU has implemented a set of disciplinary rules which outline fines and penalties for various behaviors deemed as misconduct on campus. According to new rules approved by university's highest decision-making body, students engaging in violence, holding dharnas, hunger strikes or raising anti-national slogans may face fines of up to 20,000 rupees. As per rules, repeated violations may result in expulsion if a student accumulates 5 or more punishments throughout their academic tenure. The comprehensive list of 28 types of misconduct includes activities such as blockage, gambling, unauthorized occupation of hostel rooms, use of abusive language and forgery. The JNU Students' Union has in fact expressed strong opposition to the new disciplinary manual, asserting that it appears to be an attempt to suppress a long-standing, vibrant campus culture that has been a defining characteristic of the university for decades. We have Ishika joining us from JNU. Ishika, of course, JNU bans protests in the campus. Violators will face fine or even face expulsion. Now, students have, of course, condemned this move. Take us through details as far as these violations and its consequences are concerned, and how have the student body reacted? Because they've clearly said this is an attempt to stifle campus culture. Well, yes, Radhika, as you rightly mentioned, in fact, if we talk about the Chief Proctor's Office manuals, there are certain new restrictions that have now come into being. In fact, one that causes most of the highlight is, in fact, how 20,000 rupees fine, a hefty fine of rupees 20,000 is now being levied on the students if they in fact hold any dharna in the premises of JNU. And also if they raise any anti-national slogans, then a hefty fine of 10,000 rupees will be levied on them. I have a student with me. अगर हम बात करें तो ये जो न्यू रूल्स आए हैं, न्यू रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, 20,000 रुपए तक का फाइन स्टूडेंट्स के ऊपर अगर धरना करते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? भारत में जो शिक्षा प्रणाली है, आप स्कूल से देखते होंगे, डिबेट डिसेंट का कल्चर होता है, बच्चों को सिखाते हैं डिबेट कैसे करना है, टॉपिक्स मिल जाता है। एंड दिस इज अ यूनिवर्सिटी, आपको समझना होगा कि यूनिवर्सिटी है और जेएनयू तो इसीलिए जाना जाता है कि डिबेट डिसेंट का कल्चर है यहाँ पर। आप खुद संविधान को देखो, आप कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लुक एट इट, 19 आर्टिकल 19A 19B क्या कहता है कि कहीं भी हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या जेएनयू के स्टूडेंट्स हाथ में तलवार और गन लेके प्रोटेस्ट करने जाते हैं क्या? वी गो विद द पिक्चर्स ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर, वी गो विद द पिक्चर्स ऑफ लोहिया, सावित्रीबाई एंड फुले, उसके साथ हम जाते हैं। तो आपको प्रोटेस्ट से हमारे क्या दिक्कत है? वहाँ पे आपने देखा होगा उस प्रोक्टोरियल नोटिस में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल इमोरल बिहेवियर। हु विल डिसाइड दिस इमोरल एंड मॉरल बिहेवियर? मॉरल बिहेवियर आपके रिलीजन, कल्चरल, इन बिलीव्स पे टिका होता है। हो सकता है जो मेरे लिए मॉरल हो वो उनके लिए इमोरल ना हो, वो कुछ और खाते, हम कुछ और खाते, वो कुछ और पीते, कुछ और हम पीते। यहाँ कल्चर इंटर कल्चरल है। आप खुद देखते हैं जेएनयू इज अ ट्रांसडेंटल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वेरियस तमाम तरह के लोग देश के कोने कोने से, और आप 20,000 फाइन लगा रहे हैं। यहाँ जब आपका 40% जेएनयू का बच्चा, इतने सारे स्टूडेंट्स बीपीएल कैटेगरी से आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, कैन यू एवर एक्सपेक्ट देम? दिस इज स्टाइफलिंग अप ऑफ द वॉइसेस जो आज तक सुने नहीं गए। हमारे लिए ये जगह सिर्फ उसलिए नहीं है कि आप पढ़ो। पढ़ने का अर्थ क्या होता है कि आप एक विकसित नागरिक बनो, आप सोच से, समझदारी से विकसित बनो। यही हमारी परंपरा है, इस यूनिवर्सिटी की परंपरा है, देश की परंपरा है। आप तो उसके खिलाफ जा रहे हो। वी लुक एट दिस लाइक दिस। Certainly, and there are certainly your organization also and the other student organization also have condemned this. Yes. But has there been any response from the authorities after you condemning this? As always, nothing, because आपने 3 दिन पहले हमने जलाया था इस नोटिस को, जो भी मैं तो मतलब बातें लगता है मुझे। दिस इज टोटली फैसिज्म, बिकॉज यू सी व्हेनेवर दे आर सेइंग कि अगर आप किसी तरह से किसी भी प्रोफेसर से क्वेश्चन करते हो, आप पैम्फलेट लगाते हो, पोस्टर्स लगाते हो। पैम्फलेट पोस्टर्स क्या है? बॉम्ब्स है क्या वो? पैम्फलेट पोस्टर्स आर द वे एनीवन एक्सप्रेस देयर डिसेंट। हम उससे दिखाते हैं कि हम किसी चीज़ की खिलाफत में है। आपको उससे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको इससे नहीं है कि कोई पैम्फलेट या पोस्टर लगा रहा है, प्रॉब्लम इससे नहीं एक प्रोटेस्ट कर रहा है,
प्रॉब्लम है आइडिया ऑफ वॉइस, आइडिया ऑफ एनीवन हु इज स्पीकिंग। आपको उनको दबाना है, दैट इज ऑल वी लुक एट इट। और हमने, मुझे जहां तक लगता है, आज तक कभी भी एडमिन का कोई भी इसके खिलाफ में मतलब जब भी हम कुछ प्रोटेस्ट करते हैं उनको कहने को कुछ नहीं होता, हाँ वी आर लिसनिंग, वी आर हियरिंग। So certainly, you know, as you heard, these are the students of the JNU, and they say that the new restrictions that have now come in, they go against the idea of JNU's debate and dissent, and there has been no response from the authorities after all of these student organizations, in fact, condemned this new move. Over to you. Certainly. Thank you, Shika, for bringing that voice. Students of JNU clearly outraged at this new rule, new restrictions and fines, calling this fascist regime. Thank you for those details.